Good afternoon, students. Welcome to the BoS Studies Success at CA exam for CA Foundation student for Paper 3 Quantitative Aptitude. This is organizing by the BoS Studies for the Foundation students for Success at CA exam for the Foundation Paper 3 CA Foundation course for the upcoming January examination. Myself, Dr. N.V. Ravi, Faculty Board of Studies, along with CA Rashmi Lonikar. She is a this is a faculty in taking the for the live virtual classes for the students also. Myself, along with CA Rashmi Lonikar madam, will be joining today's section. Oh, students, this section will be helpful for you for how to face this examination, CA Foundation examination. Please listen carefully our guidelines that would be definitely helpful for the upcoming examination of CA Foundation January 2025. Myself, Dr. Ravi, and faculty of Board of Studies. Rashmi Lonikar, madam, you are also here. Please introduce yourself also. Yes, good afternoon, everyone. It's so good to be back here talking to all of you. And Ravi sir will be guiding you through the whole process of how to, with the limited days that we have with our hands, how you could do better. Okay, so as you all know, that there are so many videos of quantitative aptitude that are uploaded, so you can watch any of those. Wherever you have any doubt in the study material, you can refer to that. So because all our videos are based on study material, so that will be very helpful to you. Okay, sir. Yes. Now coming to the foundation paper 3. In the last session also we have discussed about this paper foundation paper 3. This is a complete 100% application based paper also. Multiple choice question paper and all are objective type of questions. Each question carries 1 mark. Each question should have the 4 choices. If you have written anything or darken in the circle like wrongly or something or marked answer wrongly, the 0.25 marks negative mark is there that would be deducted. The duration of the examination is 2 hours. You know, this paper is a quantitative aptitude is a application and analysis based paper also, and a completely objective type and 1 mark each other. This is a 2 hours paper also be. Above all, there is a negative marking in this paper system also this 0.25 and duration of the examination is 2 hours. Now coming to the we have the 100 marks paper. The trifurcation means here business mathematics is 40 marks, logical reasoning is 20 marks, and statistics is 40 marks. And the weightages are also be given among the chapters are also be. Which chapters you will be feel comfort are also be that first you let us concentrate on the topics and get confidence on the topics and let focus on the remaining topics which you are not able to understand also be. Recently we have launched the sarans also be which is available in the BoS knowledge portal also be. We have conducted the 2 series of mock test papers are also and revision test papers are also be we have been given in the website also. Keeping all these students interest, focus on that the topics which are easily you can able to understand also. Let us come to the next part, that is we have that paper 3 quantitative aptitude as already told that section A means as per the syllabus business mathematics carrying 40 marks weightage and logical reasoning carries 20 marks weightage and statistics carries 40 marks. Whereas the coming to the mathematics syllabus,
This is a purely based on the 12th standard of the advanced mathematics. Certain topics are there, and if you look at the CBS NCRT syllabus, the applied mathematics syllabus of the 12th mathematics, which is specially the carried for the commerce students, that will helpful for the writing the chartered accountancy foundation examination. Most of the topics are easy, and even logical reasoning is also part of that applied mathematics syllabus. We had framed this syllabus are also while introducing this new course are also we have benchmarked that syllabus are also be up the applied mathematics of the NCRT syllabus of 11th 12th also be. Above all, this syllabus will helpful for using the especially in the cost accounting and the financial mathematics, financial management subjects also be. Most of the things are in the foundation. Majority weightage has given, especially in business mathematics, is the time value of money, and he has given the significant marks. Actually 12 to 14 questions are there in the examination point of view also. And next one is logical reasoning. Logical reasoning carries the 20 marks, which consisting of the four chapters actually. The number series like simple number series, letter series, uh, and number series of types, and some kind of odd man man out and coding decoding is a part of the syllabus. And these among these questions, each question, therefore 5 questions may be possibly coming from this chapter, and seating arrangement, and direction test, blood relations. 5 marks from all chapters are coming from this logical reasoning. Weightage already told. And next one is statistics part. Is this is also very important. Some students may feel that it's a kind of a theoretical syllabus are also, but it is not theoretical. It's a kind of mix of both testing your knowledge in terms of the fundamentals which are related to the merits, demerits, limitations of the topic. Apart from that, this topic containing actually majority of the syllabus from the 12th standard syllabus of this uh, majority of the boards of the country. Above all, the 12th applied mathematics syllabus are also, if you students who had opted these papers are also a major portion are carrying this syllabus also. Most of the topics are easy and comprehensive, and you can easy to understood also. If you look at the sarans also be, that will be definitely helpful for the students. If you attempt the mock test papers are also, you will get the confidence on this paper also be. Look at the importance of each topic and what kind of questions will be asking in the examination also be. Over to Rashmi madam for your something, any out or guidance for the students. Yes, I'll talk in Hindi for the other students also. जिस तरह से सर ने अभी सब कुछ समझाया है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो अपनी जो एनसीईआरटी के 12th स्टैंडर्ड की बुक्स है का जो सिलेबस है उस पे बेस्ड है। तो आप बोलेंगे वहां तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसका कारण ये है कि जो सीए कोर्स है वो कोर्स किसके है कि प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा हायर होता है। फिर उसमें दूसरा एंगल जो ऐड होता है कि बिजनेस के हिसाब से कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो एनालिटिकल स्किल्स है, आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, वो किस तरह से चेंज हो कि जो बिजनेस को सूट करे, जो बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग को सूट करे, उसकी वजह से आपको ये जो है पूरा सिलेबस उस तरह से डिजाइन किया है। देखिए टॉपिक तो वही रहेगा। जैसे हम देखते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस,
तो जो हमारा जो स्कूल में 12th में होता है उसका वेटेज कम रहता है, लेकिन यहाँ पे उसका वेटेज ज्यादा रहता है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन क्योंकि सारे स्टेट बोर्ड जो हैं भारत में वो सब एनसीईआरटी के बेसिक सिलेबस पे बेस्ड है। तो अगर आपने 12th में बोलेंगे "यार, मैंने तो मैथ्स लिया ही नहीं था तो मैं क्या करूं"। तो कोई बात नहीं ना, तो वो बुक्स तो इजीली डाउनलोडेबल है। तो आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए, या कहीं आपके फ्रेंड जिसके 12th अभी एग्जाम खत्म हो गए हैं और किसके पास स्पेयर होगी बुक, तो वो मैथ्स की बुक ले आइए, वो भी देख लीजिए। हम्म। तो आपको कभी भी ऐसा लगे तो उसके लिए आप ये ध्यान में रखिए कि ये कहीं से अलग से नहीं हुआ है। उसका बेस जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर का, वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चा जो है जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है वो अटेम्प्ट कर सके, यही उसमें है। मतलब आप कोई मतलब बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि यार ये क्यूए का पेपर तो बहुत टफ है, उसकी वजह से फाउंडेशन नहीं क्लियर हुआ। तो ये सब गलत धारणाएं हैं, वो मन से निकाल दीजिए। पहली तो बात है कि आप मन से बहुत कॉन्फिडेंट रहिए कि मुझे ये करना ही है। देखिए आपका फ्रेंड है ना, वो कर रहा है ना, जो साइंस में है वो भी कर रहा है, वो तो उससे ज्यादा कर रहा है, तो फिर आप भी कर सकते हैं। तो ये पहला सोचिए कि मेरे एज के बच्चे अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। दूसरी बात यह है कि उसमें आप देख रहे हैं कि 3 भागों में आपका पेपर डिवाइडेड है, कि 40 मार्क का आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, 20 मार्क का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉरी लॉजिकल रीजनिंग है, और 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका कॉम्बिनेशन करके आपको पढ़ना है। इसमें और अच्छी बात क्या है कि वेटेज बहुत डिफाइंड है, मतलब कौन से चैप्टर में कब पढ़ के आप कितने अच्छे से आप कर सकते हैं, मतलब मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया आगे, अब हमारी क्या हो गई, हमारी अच्छे से पढ़ाई हो गई, हमने बहुत सिंसियरली सब कुछ कर लिया है। अब टाइम है स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मैं दिन में किस चैप्टर को कितना वेटेज दूं, रोज कौन सा चैप्टर मुझे करना ही है, ये सब जो है वो आज के 2 घंटे में आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे सर। तो उस वजह से आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अभी सर बताएंगे किस किस चैप्टर को कितना वेटेज है, और स्टैटिस्टिक्स वाला भी। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में आपको ध्यान रखना है कि उसमें सारे 4 चैप्टर्स हैं, चारों को इक्वल वेटेज है। और आप देखेंगे कि स्टडी मटेरियल आपने अच्छे से कर लिया, उसमें दिए हुए सब क्वेश्चंस कर लिए, जो जो आप देखेंगे कि वीडियोस में भी अवेलेबल है। चारों चैप्टर्स के सारे वीडियोस अवेलेबल है, जिसको बहुत अच्छा मतलब हजारों में लोगों ने देखा हुआ है, तो वो वाले वीडियोस आप वापस देख लेंगे ना। तो क्या करना है कि आपको खुद से सॉल्व करना है, वहां देखना है कि भाई मेरा सोल्यूशन ठीक आया है कि नहीं, या मेरा कुछ लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, या एक नए तरीके से वो सॉल्व है। कभी कभी क्या होता है, 2 अलग तरीके से सॉल्व हो सकते हैं ना। तो वही सम जो है आप अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं अलग तरीके से कर सकती हूँ। जैसे सर ने बताया नंबर सीरीज है, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उससे क्या होगा, आपको एक के बजाय 2 मेथड्स पता लग जाएंगे। ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। और स्टैटिस्टिक्स जैसे सर ने बोला कि लगने में लगता है कि बहुत मतलब थ्योरेटिकल है, लेकिन आपने अगर एमसीक्यू उसके चैप्टर के पीछे के एमसीक्यू देखे हैं, तो वो एकदम वो सीधे सीधे डायरेक्ट वाले नहीं होते, ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको विचार करना पड़ता है। तो विचार करेंगे तो विचार करने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सब जो चैप्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको और इसीलिए स्टडी मटेरियल में जो दिए हुए एक्सरसाइजेस है, जिसमें जो थ्योरी है, वो आप अच्छे से करें। बैक टू यू सर। For your good explanation. Uh, Now I would like to give some more points added to the madams. And what are the sources of the materials which is available for the students actually? The sources basically in ICA students, ICA is already publishing the students materials, and for the study material means use of material that would be better for you people actually most and apart from that RTPs, mock test papers, and recently in the if you look at a students journal of September edition and May edition, there we have given the
about the how to face the examinations of the CA Foundation, Intermediate and Final. All these three levels were given in the Students Journal also about how to face the examination also. Next one is sources. Actually, if you look at the other sources also, Sarans also published, it has been hosted in the website also, the BoS knowledge portal. Of all the four materials, foundation, accounts, laws, quantitative aptitude, and business economics. All these materials are also available, which is framed basically. The suppose student material, study material is having a very bulk of material. It has been designed specially for understanding simple language, and only special things, crisp and basic things has been developed there. Actually, that would be helpful for you understanding the concepts and memorize those concepts also very easy, understandable also be, which are being designed in the diagrammatic and pictorial formats are also be, that will be definitely helpful to you, the sarans and other materials also. One more request to the students are also be, we are very near reaching the examination also. This examination also be conducting from the 12th. Our examination is on the next 18th January only. If you look at this in this, there also be this about the exam, this paper, this also be given actually. If you look at the, this will definitely helpful the about the uh, format of the OMR sheet format also, but take printout of that actually. OMR sheet format, just look at that. That will definitely helpful for where we have to look at the. If you see the, madam, if you helpful that OMR sheet foundation OMR sheet format, if you search it at Google, then show to them. Actually, that will be helpful to you. Okay, sir. Okay. But I just copy the link and save paste it. That would yes. be definitely that resource cdnica.org exam. This last format actually. Last format is there. Okay, I'll Just just. copy the link and paste that, and in the Google, that will be definitely. Then I will continue after when you will be open. That let me know. Okay, madam. Yes, sir. I will let you know. Hmm. And concentrate on where the block pens, the pens are required, and HB pencils are required. HB pencil especially required where the darker the circles places only. Wherever the necessary the pens place, pen has to be written actually. Please read the carefully. We cannot, as a faculty, we can tell only. We have to practice also only. Okay, please look at and carefully do these things actually. Uh, they darken the circles part with the HB pencil. Okay, now I can move to the other slide. Some other specific guidelines about the paper actually. And many students may ask in about the examination whether the calculators are allowed or not. Calculators are allowed in the examination or not. Students are allowed to be battery operated portable calculators in all the subjects. The calculator can be any type of 6 functions, 12 digits up to 2 memories. This is only allowed. Not scientific calculators are not allowed in the examination also. And if you look at, this is the format, OMR sheet paper 3 format, and this would be definitely helpful to you, and how to see this, where use a block pens, and wherever block pen, write in the boxes, and question booklet number, all these things medium you have to write, and here the circle places only use only HB pencil, darken appropriate circle, write and dark correct question booklet number printed.
All these things you have to, the instruction for candidates are also be given careful, and you have to write and a space for that is a signature of, and all these things you should be carefully write. And I will close this, and my dear friends, and this one. Now I am coming to this. तो परिणीति, हम दोनों भाषाओं में बात कर रहे हैं, तो आपको जहां से जिस भाषा में सुविधा हो रही है सुनने में, जो सर बोल रहे हैं वही मैं बता रही हूँ, चेंज करके भी। तो आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ओके, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। For those who are asking, yes, for those who want to, the PDF link has been posted on the group chat. Okay, so you can access from there. Yes, yes, madam, you have you, please create the PDF of that file and post there actually. Yes, sir. It's a PDF link only. Okay, you want me to post it? Okay, yes, I Post. posted it. Yes, sir. I'll do that. Some students just missed Krish Darij. We want clarity about the negative marking scheme. For example, if I have attempted 10 questions out of which 4 are wrong, then my marks will be 5 or 9 actually. 4 questions are wrong means you have attempted wrong means 4 into 0.25. That means how much marks actually 1 mark will be deducted actually. Am I right? If you are attempted the 4 questions are wrong, 0.25 is the negative marking actually. So you will be getting 0.25 into 4, then it is a 1 mark equal. So you will be getting 1 mark will be deducted there actually. This is the simple thing, 9 marks. Hope you understood, student. Mr. Krish, 0.25 will be deducted. Hope you understood. Okay, now I proceed to next one, whether the calculator is allowed or not. This point is most of the things where calculators are used, especially the topics in the time value of money and some other places actually, and values pertains to the present values and future values. When it powers to the 10, then such cases actually we use the calculator functions are also because the calculator tricks are also be known, you know very well, also be using that. Most of the cases the present values are also be given itself in the question paper itself also be. So these are the advantages. You use the calculator as the case where the value is not provided in the question paper also be. Now I move to the other slide. What kind of questions are how many number of questions were given, possible questions were given in the quantitative aptitude as part of the business mathematics also be. You know very well, coming to the business mathematics 40 marks concern, mathematics of finance, earlier its name is time value of money, 14 expected, 12 to 14 expected, up to 14 expected questions are possible. Ratio, proportions, indices, and logarithms, 5 questions are. From ratio, 1 question, proportion, 2 questions are 1 question, indices, 2 questions, logarithms, 2 questions. Like that, permutations would be there. Arithmetic progression, geometric progression, chapter 6 is concerned. 2 questions from these chapters are also be possibilities are there. And maybe sometimes 3 questions from the arithmetic progression also. But 4 questions are expecting from these questions, from these chapters of arithmetic progression, geometric progression. Next, equations. Equations is a second chapter, the quadratic equation, cubic equations, and word problems, all type of questions are there. If you sum of this, coverage of 50% of the syllabus from 70% of the coverage of the syllabus of the business mathematics. So 28 to among this 40
marks, 28 means around 50% coverage actually of the syllabus and 70% of the uh, syllabus actually. And coverage is 75% actually in terms of these sets mathematics, logical sets mathematics, sets relations, functions, basics of limits and continuity functions, and linear inequalities. One question or two questions maximum possibilities. Sets, what is power set? Sometimes such kind of questions simply may ask power set, and kind of like a union B, De Morgan's law, and n of A union B equal to n of A union B equal to n of A union B in union of C. Such kind of formulas are also very important, and Venn diagram related. One relation, on to relation, into relation, like these all related to the functions are also be, and relations are also be very important. One questions possibly coming from this chapter actually. Sets one question, relations one question, functions one question, and the basics of limits and continuity of mixing both functions. What is a continuous functions are also be. This just to understand the basics of the differential calculus, how it can be defined. For this purpose only, basics only, limits of continuity is testing for the knowledge purpose of understanding the basics of differential calculus functions, how it been defined. For this purpose, for this purpose, it is not completely given about the complete mathematical formulas are also the simple things only tested here only. And if you look at this chapter, these two chapters and 4162, we can get the coverage of the 50% of the syllabus and 70% of the weightage also of the business mathematics is there. Next one is if you look at the chapter 7 and chapter 3, the coverage is 75% of the syllabus, and among all this combining this syllabus, 80% coverage is there. Now I'm coming to the next chapters of permutation and combinations. Is of weightage is of expected questions is 4 questions, permutation from permutations 2 questions, and combinations from the 2 questions, and the applications of differential and integral calculus are expected number of questions are 3. These are the expected number of questions or types of the questions which can be asked in the examinations. Now over to Rashmi madam for further discussion of this business mathematics part, weightage Can you discussion. show the syllabus for the business mathematics? I will move. Just two slides back. No, you have to go back. Just these 3 slides that you were talking about. Yes. Yes, Yes, please. this one. Yes, sir. Thank you so much, sir. जो पहला कॉलम है उसमें चैप्टर नंबर दिया है, दूसरे कॉलम में चैप्टर के बारे में टॉपिक का नाम है, और जो तीसरा कॉलम है ना उसमें सर ने आपको जितने उस चैप्टर पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो दिया है। जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस का चैप्टर है तो उसमें हमारे पास क्या है, अराउंड 14 क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, 12 से 14 इस तरह का रहेगा। तो उसमें आपको वहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। जो नीचे लिखा है वो मतलब है ये बताना चाह रहे हैं सर कि इतने चैप्टर्स अगर आप ये जो 4-5 चैप्टर्स कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपका 75% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उतनी पढ़ाई आपकी हो जाएगी। उसमें अगर आप पुराना स्टडी मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं तो उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नाम था, जिसे आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। आपके पास पुराना है कोई बात नहीं है, लेकिन नया जो स्टडी मटेरियल है वो आप जो है वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं या कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स है वो आपको लेटेस्ट आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कहीं जाके खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जितने आपको कुछ पेज लग रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग भी स्क्रिबल कर देते हैं ना, तो उस वजह से हमें ठीक से दिख नहीं रहा है, या जो
एक्सरसाइजेस है उसमें हमने टिक कर दिया होता है, तो आप फ्रेश माइंड से उसको कवर कर सकते हैं। उसके आगे जाके मुझे एक बात बोलनी है कि जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स हैं, मतलब जो रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज, ये जो चैप्टर्स है ना, वो मार्क्स के आगे जाके भी आपको आनी ही चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे इंडाइसेस है, वो आपको कहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स में भी लगने वाले हैं, आपको हर जगह वो लगने वाले हैं ना। अगर आप थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं तो वहां पे भी लगने वाला है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी लगना है। तो इसीलिए वो जो 3 चैप्टर्स है वो आप थरोली कीजिए। उसके सारे एक्सरसाइजेस आप अच्छे से कीजिए। What I would like to emphasize is the first, second, and third chapters. You have to do them, because if you have not taken mathematics in the 11th and 12th, what happens is you have not done maths for a long time, and now you have started doing it. No doubt about it. You have done it also, but there is a lingering insecurity in your mind कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा कि नहीं। लेकिन उससे अगर आप ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप उसके सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे लॉग के क्वेश्चंस हैं या छोटे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस है, तो उससे क्या होगा, आपको बाकी सारा सिलेबस में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली जो उसके बाकी के चैप्टर्स हैं, तो उस हिसाब से आप अपना टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस चैप्टर को कितना टाइम देना है। क्योंकि अगर मेरा मैथमेटिक्स और फाइनेंस मुझे 14 मार्क्स दे रहा है, तो मुझे उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। उसके जितने भी फॉर्मूले हैं मुझे अच्छे से रट्टे होने चाहिए। उसमें आप ये नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा फॉर्मूला है ये क्या करो, तो उसको मार्क्स भी तो ज्यादा है ना। तो आपको पीवी का कॉन्सेप्ट है ना, प्रेजेंट वैल्यू का है, फ्यूचर वैल्यू का है, एन्युटी का है, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी वाली जो वो है पीडीएफ है, वो भी अपलोडेड है। तो आप जहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोडेड है वो वाला ढूंढ लीजिए, उसमें से सारी, मतलब ना बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उस समय याद रहता है पीवी क्या है, एफवी क्या है, लेकिन फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं कि जहाँ पे पीडीएफ में भी दिया है, बुक में तो दिया ही है, लेकिन मैंने भी अलग से उसमें डाला हुआ है, जहाँ सिंपल वर्ड्स में, जो आम भाषा में उसके कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग है वो वहां पे लिखा हुआ है। ओके, प्रणीति, आई होप यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अनीता, यू शुड, जो है ना, आप पहले मॉड्यूल अच्छे से कीजिए, उसके बाद आप जो है तुरंत उसके बाद एमटीपी आरटीपी जो है उस पर जा सकते हैं। इवन मॉक टेस्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो एक बार डाउनलोड करके वो करके देख लीजिए सॉल्व किए, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, मिक्स आते हैं ना, जब हम स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज करते हैं तो उसी चैप्टर पे सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें ईज हो जाती है आंसर करने में। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो उसमें मिक्स एंड मैच होता है ना, तो उसमें आपको और अच्छे से हो जाएगा। एक सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो ओएमआर की शीट है ना, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैंने पीडीएफ भी लगा दी है यहाँ पे, तो या आप वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ना आप 5-6 प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उतना सा खर्चा आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो वो निकाल लीजिए और आप उसको गोले बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, रब करने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपने सपोज आंसर आया -2, लेकिन आप जल्दी में उसको +2 वाले को सर्कल कर दिया, फिर आपके तुरंत ध्यान में आ गया, तो आप वो जो +2 है ना, क्योंकि जल्दी रहती है ना हमें, तो वो हम रब करते हैं और वो ठीक से रब नहीं होता, और -2 भी हमने कलर कर दिया, तो वो तो ओएमआर रीडर है ना, वहां कोई आदमी तो बैठा नहीं है, उसको 2 दिखते हैं आंसर, तो वो आपको क्या कर देता है, नेगेटिव मार्क दे देता है। या कभी कभी आप जब रब कर रहे होते हैं तो ऊपर वाला आंसर भी रब हो जाता है, जो आपके मन में नहीं था वो तो ठीक था, लेकिन वो रब हो गया तो उसके भी मार्क्स चले गए, वहां 0 आ गया। तो इसीलिए सर ने बहुत अच्छी बात की है कि आपको जो है ओएमआर की पूरी शीट है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे नाम भरते समय कैसे कलर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो पूरा आपको अच्छे से वहां पे दिख जाएगा। ठीक है। कैन आई ओनली appear time value of money in maths and rest I can complete. See, what happens is, if you're, why are you limiting your chances, Manish Khurana? आप अपने
पासिंग की जो प्रोबेबिलिटी है ना, स्टैटिस्टिक्स आप कर रहे हैं तो उसके आप कम क्यों कर रहे हैं? आपने अगर टाइम वैल्यू ऑफ वैल्यू किया है और आपने फर्स्ट 2 3 चैप्टर किए, जैसे आपने सर ने दिखाया कि 28 मार्क्स उतने चैप्टर्स करने से आपको मिल जाएंगे, तो वो आप पूरा करीजिए। स्टैटिस्टिक्स भी है, एलआर भी है, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। भूमिका ऐसे होगा नहीं कि दो सेम ऑप्शंस आएंगे। वो कैसे हो जाता है, कभी कभी स्टडी मटेरियल में हो सकता है लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। और इन केस बहुत माइन्यूट चांस है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इंस्टीट्यूट लेवल पर डिसाइड होता है कि उस क्वेश्चन का क्या करें। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उस समय आपको जो ठीक लगे वो आंसर कीजिए, लेकिन ऐसे मतलब होने की संभावनाएं बहुत कम है। ओके, so there is a very less chance that you will have a question where there are two same options. Okay, so it does not happen. One Okay. second, madam. I will add it to the Yes, students' sir. question also. Uh, Pranita, can you please refer time for question so that can complete the paper time within 15 minutes for revision? Honestly telling, this paper 3 and paper 4, they don't have the as per the examination guidelines, there is no reading time for the question paper also. Please look at this 2 hours examination paper, whereas the other papers are having the reading time. This is strictly as per the guidelines only, we have to follow, adhere to that. And number of questions, number of somebody, the Pranita also, can you please tell me number of questions? Number of questions is this is 100 marks question paper, 100 objective type questions within 2 hours. Okay, there is no reading time also be. Next one is extra sheets to solve the maths paper. This is a in the paper left side itself, actually the space for the rough work was also be provided. Space for the in the question paper itself, actually from the last September onwards, the question paper can carry to home also be. Okay, please look at this. Earlier, this kind of things were not allowed in the institute for the MCQ based papers. You can carry out also be. And next thing is you can work out in the question paper itself there in the left side of the some specific places there. The rough work space also be mentioned there actually. One again and again telling, this is a 2 hours question paper, 100 objective type papers, and concentrate more and practice well, which most of the questions are objective type questions. Simple objective questions are only be testing here actually. Some possibility are that some questions which are it takes time, especially those topics are taking time. Let us concentrate lastly or for you do it first. Whatever you feel simply those questions are easily answerable, that questions mark, and a dark the circles mark answers are also be. And after last minute if you draw there, that may not be helpful. Okay. And रुद्रा, रुद्रा इज आस्किंग क्वेश्चन का लेफ्ट साइड में वर्कशीट वर्किंग कर सकते हैं क्या? एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में एक स्पेस होते हैं एक्चुअली रफ वर्क के लिए, वहां कर सकते हैं। बाद में पूरा आपको ने डार्कन करेगा तो ना क्वेश्चन क्या है आपने देखना भी मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली। ओके, प्लीज टेक केयर एंड the question paper should be questions should be after some time when you review, you should able to understand also while doing all these things. Next, madam, you can share your. Thank you, sir. सारा एलआर के 20 मार्क्स का एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग, और उसको आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद मनीष, ठीक है, लॉग वाला आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी तो तीनों जो बातें हैं ना, इस फर्स्ट चैप्टर के रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, वो तो आपको करने ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि बाद में आपको लगेगा अरे यार मैंने क्यों छोड़ दिया। बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो हम स्कूल लेवल पे सीखे होते हैं ना, एट One नाइन्थ में thing आपने। I'm adding to question only Manish question actually.
Yes, sir. See the here testing only logarithmic one question or for the ratio one question and proportions one question, properties of proportions and ratio may just as some theoretical questions also be possible actually. And apart from that, indices one question, logarithm is one question actually. Logarithm, see, look at the basic formulas. Basic things only be tested actually. They don't need to ask the your logarithmic value log table kya hai. That is not able to. That is not going to test. Much difficult questions are also be. Please keep it. See the study material examples. Once again, I request to the all the students, those who are attempting in the foundation course, business mathematics, logical reasoning, and statistics part of the quantitative aptitude. Our study material is very important to prepare for the examination also be. Most of the things are come from this material within the portion of the syllabus only actually. And you did not think about much and difficult questions है ये हमने पढ़ाई नहीं किया ये that actually don't think like that actually. It's a basics only, objectives and fundamentals only, testing here only, your knowledge only testing. So our study material is the main base for this. If anything as two questions or three questions, wrong questions are the other the things will be taken care by the exam committees. Exam that respective committee will be take care, and nobody will be suffer on these aspects actually. Why you don't think about much of this? If wrong is there, wrong definitely. Students will be definitely justified on these aspects. Okay, madam. Over to madam. Yes, sir. Thank you, sir. अंकित बोल रहे हैं व्हाट शुड बी अप्रोच टुवर्ड्स चैप्टर्स 5, 6, 7. ओके. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज है, और सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस है. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले जो है ना, उसमें आपको एडवांटेज क्या होता है, आप वहां पे भी पढ़ेंगे तो उसको आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी उसका एडवांटेज आएगा, क्योंकि फिर जैसे सिलेक्शन ऑफ बॉल्स रहता है तो आपको ये पता लगेगा कि उस समय मुझे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है ना. तो उसमें क्या है कि जो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना वो भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. द लॉजिक इन द सॉल्व एग्जाम्पल इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन द स्टडी मटेरियल ऑल्सो. Okay, so you could do that. There are not much formula. There's just one or two formula. One is for combination and one is for permutation, and there are some properties formula. Okay, so that you can easily do. हिंदी में जो सर ने इसका चैप्टर फर्स्ट का बताया है वो मैं आपको बता दूं कि रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो पे एक क्वेश्चन, प्रोपोर्शन पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पे एक क्वेश्चन, इंडाइसेस और लॉगरिथम पे एक एक क्वेश्चन आएगा. और बहुत सिंपल, जैसे लॉग ऑफ m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग n, मतलब उस सिंपल टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको कवर हो जाएगा. तो वो क्योंकि क्या होता है ना, एक एक मार्क के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको उसका एडवांटेज हो जाएगा. तो वो कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे व्हाट इज एन इनवर्स रेशियो ना, उस टाइप के क्वेश्चन में आप आराम से आंसर कर सकते हैं. तो इसीलिए वो चैप्टर्स पे इस जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से कीजिएगा. ओके, देन यस मनीष, यू आर मोस्ट वेलकम, इज थैंकिंग. ओके, इंटीग्रेशन का चैप्टर स्किप कर सकते हैं क्या? तो मैं यही बोलूंगी, जो सिंपल वाले हैं ना, जो सिंपल, जो 7-8 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, और उसका तुरंत आता है इंटीग्रल ऑफ, जैसे 1/x इज क्या, तो log x है ना, तो वो वाले क्यों छोड़ने, उसी टाइप के आएंगे. देखिए क्या होता है कि स्टडी मटेरियल जब फॉर्मुलेट होता है तो उसमें आपको एक कंप्लीट आइडिया देने के लिए वो फॉर्मुलेट होता है कि जो पढ़ के आपको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि उतना डीप में हम जाते नहीं हैं. ऐसे कंटिन्यूटी का देखने जाए ना तो वो कॉन्सेप्ट इतना है कि आप एमएससी मैथमेटिक्स वाले भी कंटिन्यूटी ही पढ़ते हैं. तो क्या हमारी और उनकी कंटिन्यूटी चैप्टर की सेम वेटेज की होती है क्या? नहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग का फर्क रहता है. तो मैं चाहूंगी कि जो
ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बात दूसरी है। लेकिन आप हंसे हंसते खेलते अगर उस चैप्टर के मतलब जो फॉर्मूले है ना, जैसे अभी तक तो आपने नोटबुक बना ही ली होगी फॉर्मूले की, तो आप उस माइंडसेट से मत वो खोलिएगा कि मैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला के पेजेस है ना वो स्किप करने वाली हूँ। उस तरह ना करके आप अच्छे से वो वाले पेजेस भी देख लें, एटलीस्ट गो थ्रू देम। What I would try to tell you is just go through the formula, and if you get question, and you will get questions which are just directly based on those formulas for chapters on integration differentiation, so you could easily answer them. Okay. Then sequence and series, simple. Okay, because see what happens in sequence and series, the same thing you are applying in LR for number series, है ना? प्लस माइनस करना या ज्योमेट्रिक करना, वन डिवाइडेड बाय द अदर, दैट्स जस्ट वन और द अदर एप्लीकेशन, तो वो दोनों इसमें आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। सच रिलेशन में वेन डायग्राम बना लीजिए, है ना, वो जल्दी से हो जाता है। या सेट्स में व्हाट इज, जैसे सर ने बताया, व्हाट इज अ पावर सेट, या किसी को किसी सेट का दिया है तो उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, तो छोटे वाले क्वेश्चंस वो आपको आ सकते हैं। यस सर, ओवर टू यू। Yes, madam. Thank you for your assistance in this. Yes, yes. Yes, now I am coming to this next portion, like logical reasoning only. We have already covered about the uh, like business mathematics concepts only. So can you do it full screen, sir? Is it fine No, sir. now? No. No, it's a QR. Oh my God! Again, I had to open. PDF. I think you close the file, sir. By mistake. Hmm. Okay, just I will commit to that back. Actually. You have shared anything, madam? No, no. I'll just open it for you. Please, PDF please. कर लिया वो Hmm. डाउनलोड किया होगा ना, Hmm. कहाँ पे डाउनलोड किया होगा? Yes, sir. You LR. yeah. No, just you can share, madam, please. I Yes. can. Sir, You are I've share. shared. I've shared, sir. You can continue. Can you see the screen, sir? Yes. Yes, yes, yes. Now I'm coming to this portion, like uh, you darken this or anybody else actually. No, somebody else, sir. If such kind of things are taken, we will severe warning to these fellows. If you are not interested, kindly quit from these sections. Don't join in this sport. चलता है ना। मैं निकालूंगा. ऐसे। मैं निकालूंगा. Madam, you speak sometime. Just I will come back. Actually. Yes, sir. ओके सर, नाउ विथ लॉजिकल रीजनिंग, ये जो क्वेश्चंस है ना, जैसे बैंक के क्लरिकल स्टाफ वाले जो एग्जाम रहती है, उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी है। तो जहां तक हो सके आप अपना जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है वो वाले सारे क्वेश्चंस कीजिए, ज्यादा बाहर के कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। What we would like to tell you is all the solved examples in this set of logical reasoning. You should make sure that you have done all the questions in the study material. Mostly, you'll get all questions that are there in the study material. You will be able to attempt the questions that are coming in the exam. So number series, coding, decoding, and odd man out. So those, so you can see you will get one questions from there. Then direction tests. So क्या हो जाता है बहुत बार कि एग्जाम के टाइम में हम डायरेक्शन में गलती करते हैं, तो कोई सा भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है होगा ना, तो आप माइंड में वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले बना लीजिए और उसके बाद वो अटेम्प्ट कर लीजिए कहाँ पे आपका जो यहाँ पे रफ पेज दिया हुआ है
वहां पे वो एरो बना लीजिए। हमको सबको मालूम है कि नॉर्थ ऊपर रहता है, लेकिन उस समय क्वेश्चन पढ़ के हमें उसको सॉल्व करना है ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। Then seating arrangement, again the same thing. If you have a little doubt, just make sure you're drawing the table like, if six people are sitting in front of each other in front of a table, तो आप वहां पे इमेजिन कीजिए कि मैं अगर सामने की तरफ बैठ रही हूँ, तो मेरा दायां हाथ कहाँ होगा, बायां हाथ कहाँ होगा. So like if you have a question on seating arrangement, in like people sitting across a table, then you could actually think like, what if I'm sitting over there, who will be to my left, who will be to my right. So that becomes easier for you to give the answer. Now I am adding to the madam's. Yes, sir. Madam, now it's visible for you for the uh, PPT. Yes. Yes, sir. Thank you so much, madam, for your good presentation on this as logical reasoning part also. And logical reasoning, dear students, has this section divided into 4 chapters consisting of number series, coding, decoding, and odd man out. Please see the carefully the number series may be some systematic way of the increasing or multiple or something kind of some approach is there among the number. It has been framed based on some logic only. And coding also be very important. Suppose Madras is coding or something 5 letter series or something 6 letter series has been given coded alphabetical with some numerical values were also be given. That accordingly you have to frame the coding also be some code for some letters, and you have to based on that alphabetics which code has been given, you have to develop that logic also. Okay. Next one is odd man out also be. In the series, among these one looks like a different actually. It is like a odd one now. So we have to categorize that the series or alphabetical series which is looking like different. We have to taking odd one on among the series. So 5 questions are coming from these topics. Direction test. Direction test actually, you know very well the 8 directions are there, and south, east, north, west, and all 4 directions. Among these, you have to categorically see the between the centers are also be, and which clockwise direction, anti-clockwise direction moving or not. Accordingly, you have to find the direction also be, and in the direction test also be the categories are also be given, and 90 degrees moving in the clock direction, and 180 degrees straight line, and again 270 degrees and 360 degrees. Total circle is 360 degrees. Whether it is clockwise direction, anti-clockwise, just only you have to look at those aspects actually. In the similar way, seating arrangements, linear seating arrangements, circular arrangements, and be carefully see 5% or 6% who is in the last ends and immediate to the left ends, right hand. Like that way, the questions are given or framed also in the study material also. In the last examination also be, if you look at the seating arrangements also, the study material example based question only, their exam has been given actually. Once again, I request those questions are also be concentrate on the examination purpose. That will be definitely helpful. For practice purpose, good number of questions are also be given. Please look at there. If anything wrongs are there, definitely wrong questions are we will be taken care, and while review the examination pattern also, examination of papers. It's not, we could not leave it on that aspect. Please concentrate and devote good time, and you don't feel that this paper is also be difficult. Be confident,
we are with you. We have given good lines, guidelines are also be, your parents are also be good, given good guidelines for you. Your teachers are also, neighbors teachers are also be good mentors. They have definitely given good guidance for the your aim is to be focused on that you will become a chartered accountant of the future actually. That is my request. And please focus on the examination aspect only for some period of time. Just you will be keep away from the social medias like WhatsApp and other Facebook, Twitter, and now I'm not using those aspects much, but you have to concentrate when you want to complete your CA foundation examination, clear the foundation examination very well, and be confident on the examination. Over to Madam for further on these lines of this topic. And blood relations are also be very important actually. And just look at the Indian blood relations only, those aspects, how it will be, and a photograph relation related questions are also be. Some questions like uh, the mathematical symbols are also be question relation has been mentioned. And keeping all these importance of these questions, types of the question, what kind of questions were be earlier also be given, and what models were given also be in the mock test were also, these are all very important also. Madam, for your. Yes, sir. Thank you. Like sir has already told that in case of blood relations, so blood relations, the simple questions are there. ब्लड रिलेशंस में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको ऑप्शंस पहले देख लेने हैं। उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी ना जेंडर पता नहीं लगता कि मतलब जो पूछा है, जैसे हाउ इज ए रिलेटेड, तो उसमें ये हमें पता नहीं लग रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप वहां ऑप्शंस में देखिए देखिए आपको बहुत बार ऐसे दिखेंगे कि सर हमारे सिलेबस में जो स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस है उसमें ही दिख जाएगा कि चारों जो ऑप्शंस है वो लेडीज हैं। तो आपके मतलब फिर उसमें आपको ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि लड़का है या लड़की है तो वो इस साइड से आएगा, या भाई उसको पकड़ो या बहन उसको पकड़ो। तो आप ऑप्शन से भी ब्लड रिलेशंस में आपको क्लैरिटी आ जाती है। और जैसे ब्लड रिलेशंस का के बारे में आपको मैंने हर बार बताया है कि जिसका भी पूछा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, वेदर द लेवल्स आर चेंजिंग। So from top to bottom, are you going, or from bottom to top you are going? Okay. So how is A related to B? So that time you have to see A. If A is from A to B when I am going, if I am coming down, तो वो क्या होंगे? वो हमारी मम्मी पापा हो सकते हैं, मामा मामा हो सकते हैं, या चाचा चाची हो सकते हैं। So that time, if it is going from top to bottom, if you are coming down, then those people will be maybe our parents or uncle and aunts. If there is more than difference of two levels, then it will be grandparents. More than three, if it is three or more, then it will be great grandparents. Okay, तो वो वाले लॉजिक है आपको ये करना है। You should not only think about the question, just reading the question. First, read the options also, so you get the clarity. If when you are reading the question, it's a very simple question, then do it directly. ये मैं आपको किस चीज के लिए बता रही हूँ कि जहां पे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आपने सीधे से पढ़ा क्वेश्चन, आपको तुरंत समझ में आ गया, तो आप तुरंत आंसर कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि एक हाथ क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स जो हैं, मैं तो चाहूंगी कि आप वो पहला अटेम्प्ट करके उसको अपने मतलब जेब में ना वो 20 मार्क्स डाल लीजिए। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि 20 के 20 आपको मिल जाएंगे। आपको लग रहा है कि भाई 3-4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो आप ये देखिए आपके 15 अच्छे से आ रहे हैं ना, तो वो 15 कर लीजिए, मूव ऑन। आप उसमें अटक में मत जाइए कि वो 5 मार्क्स के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि एलआर तो मुझे आना ही है, एलआर आना ही है। तो 15 कर लीजिए, उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है ना, वो बाद में आप आके कर सकते हैं। वो जो 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप ऑप्शंस पढ़िए, एक फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है लेवल कितना चेंज हो रहा है, whether I am going from top to bottom or I am going from bottom to top, तो वो ये पर्टिकुलरली ब्लड रिलेशंस के लिए है। डायरेक्शंस के लिए भी है ना,
ही इज गोइंग टुवर्ड्स द सनसेट वाला जो क्वेश्चन है, तो गोइंग टुवर्ड्स द सनसेट मतलब क्या होता है कि वो पश्चिम की तरह जा रहा है ना। सूर्य तो पश्चिम में ही अंत होगा ना, अस्त होगा, सॉरी। तो उसमें आपको ये देखना है कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। आप उसमें आप भाषा की ओर ध्यान दीजिए, एलआर के क्वेश्चंस में स्पेशली भाषा की तरफ ध्यान दीजिए। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है फोटोग्राफ्स के बारे में भी, है ना, पीपल आर सिटिंग इन अ फोटोग्राफ, तो उस समय आप देख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि फेसिंग टूवर्ड्स द ऑडियंस, फेसिंग अवे फ्रॉम द ऑडियंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिस तरह से लगता है आप वो अरेंजमेंट बना लीजिए। उसके बाद जैसे उन्होंने बताया है वो हम टर्न कर सकते हैं ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जहां पे हमने टर्न किया हुआ है उसको। तो उस तरह से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब नंबर सीरीज में जो है, हाँ, नंबर सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यू मस्ट नो योर प्राइम नंबर्स। बहुत बार ऐसा होता है ना कि 13 का है तो 13 तो चलो हमको समझ में आ जाता है, 29 का टेबल रहता है, तो आप थोड़ा सा लॉजिकली देखिए कि 3 का है क्या, 7 का है क्या ना, वो आपको जो नंबर्स हैं उससे आपको अंदाजा आ जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा है कि आपको थोड़े से प्राइम नंबर, अगर सीधे सीधे से कुछ नहीं आ रहा है नंबर सीरीज में, तो आप देखिए कहीं प्राइम नंबर्स तो इन्वॉल्व नहीं है, या कभी डिफरेंस जो है ना वो दो स्टेप्स में आ जाता है कि दोनों का डिफरेंस है, सपोज 10 आ गया फिर 20 आ गया, लेकिन उसके बाद में कुछ और उसमें ट्विस्ट होता है। फिर मैंने मार्क करके दिया है, देखिए जो तीन 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 नंबर्स का एक सेट हो गया, फिर बाद नेक्स्ट तीन का, फिर नेक्स्ट तीन का। तो वो वाले क्वेश्चंस आप जो हैं वो करके देख लीजिए, क्योंकि इन दोज क्वेश्चंस you do not have a simple number series. You will have three numbers, they will form a set, then there is a difference between the numbers, then the next three numbers again the same property is repeated। तो वो वाले क्वेश्चंस है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए आपके स्टडी मटेरियल में, उसको रेड से, ग्रीन से, जो भी कलर आपको पसंद है उससे मार्क करके कर लीजिए। यस सर। Yes, yes, students, now come back to the portion of the statistics part, which is very important and easily scoreable also be. You all know that statistics part carrying 40 marks of weightage, consisting of the statistical description of data and sampling, measures of central tendency, dispersion, correlation, regression, and index numbers. These are the very important and easy chapters are also be. These are the very significant in the entire portion of the quantitative aptitude. Statistical description of data, measures of central tendency and dispersion, correlation and regression, and index numbers chapters are also. Combining of all these chapters, you will get the coverage of 30 marks of the uh, entire 40 marks of the syllabus, actually 40 marks of the weightage. That means coverage is 75 marks, weightage marks, coverage is 67% of the statistics syllabus. But just you categorize the syllabus are also be where you can get score well. Let us focus on those topics are also be, and be practice, keep again and again. If anything errors are noticed, don't mind, actually that will be taken care actually. Just let us concentrate, be positive on these topics like index numbers, what kind of questions are coming also be. So every time the 4, 5, 6 questions, those topics normally repeating also be. Those questions, what is the ideal index number? In chat box, if anybody tells, that would be great. Anybody has given me now? Which is the ideal index number? Nobody has answered. Hmm? Nobody has answered. Fisher's index number is the ideal index number. Like that way, Fisher's index number based on the geometric mean of last pairs and Parshi's index number. How many tests of adequacy is there? 4 tests of adequacy.
Like that, you have to the time reversal test, factor reverse test, circular test, unit test, all the 4 tests of adequacy. Which is the best among the ideal index number is Fisher's index number also. Fisher's index number satisfies both time reversal test and factor reversal. Like that way, just you focus on the correlation, regression, what is correlation, what is the limits of the correlation and -1 to +1, negative correlation, positive correlation, what is the coefficient of correlation coefficient, square of the correlation, 0 and 1, coefficient of determination, coefficient of non-determination, and what is the regression equation of x, y on x, x on y. Simply look at those aspects and what is the measures of central tendency, mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean, what is the measures of dispersion, what is the measures of dispersion, what is the types of measures of dispersion, absolute measures of dispersion, relative measures of dispersion, or what is meant by measures of dispersion, actually various types of range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. These are the absolute measures of dispersions, and relative coefficient of range, coefficient of mean deviation, coefficient of uh, quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variance. These are the relative measures of dispersions. And respective properties are also we have to be studied carefully. Those properties are also equally important. Mean is affected by change of origin and change of scale also be. In every time lectures are also be I deeply they tell about the importance of the what is the scale factor and scale and origin are also be. These are all very important, and you look at on those aspects and kindly do the all exercise for A, set B questions are also be, which are specially given like MCQs based kind of questions are also be. Try to work out all the example sums also be. Focus on those aspects. Mock test papers are also in the statistical description of data also be just what kind of data and primary data, secondary data, where it is used also be, and where median is used, where mode is used, where histogram is used, and those diagrams please look at it, and where primary data and questionnaires are also be kind of related, and all stub kind of questions you can please look at those aspects. And madam, you can just look at these aspects also, just you can explain in the Yes, sir. you have covered in the statistics part also. Just I will go for next kind of important chapters sir also. Yes, sir. Ma'am, can you tell the difference between absolute and relative dispersion? See, absolute depends on the units, whereas relative is unit free. Secondly, when you are wanting to compare two types of data, then you should go for relative. Okay, when you are trying to understand one set of data, then you should go for absolute. But like sir just now told you, wherever you have coefficient of range, you have coefficient of mean deviation, coefficient of quartile deviation. So all those things are the relative measures of dispersion. Where you are talking of only range, mean deviation, quartile deviation, those are the absolute measures of dispersion. Okay. Yes. Then, as I was telling you about this thing, the chapter on statistical, what is it called? नाम बताती हूँ. Measures of what is the statistical description of data. So वो वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आपको क्या है, उसमें जो थ्योरी पोर्शन है, जैसे ना हम लोगों ने किया हुआ है प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, उसमें एक्यूरेसी का क्या वैल्यू है, उसको प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, फिर जैसे हम कौन से टेक्निक से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा उसमें आपको देखिए आपको एमसीक्यू में भी दिख जाएंगे, उसमें वो होगा कि इस टाइप के सिचुएशन के लिए मुझे कौन सा यूज करना है ना, कौन सा मेथड यूज करना है डेटा कलेक्शन के लिए. तो
जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो वहां जाके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्या, या उस जगह पे जाने से पहले अगर सपोज रेल एक्सीडेंट है तो हम उसके जो दो स्टेशंस हैं आगे और पीछे, उनके स्टेशन मास्टर से जाके बात कर सकते हैं क्या। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे एमसीक्यू में, तो वो आप देख सकते हैं कि विच मेथड विल बी बेटर सुटेड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर अ पर्टिकुलर केस। सो वो हुआ। उसके बाद और क्या बोल रहे हैं, आई डेंट हैव मैथ्स, भूमि बोल रही है, मैम आई डेंट हैव मैथ्स इन 11th and 12th, so I'm facing problems in solving maths typical question, can you please guide us, I'm not taking any tuition, just preparing for my CK. Bhumi, please remember that it is more of a mindset than the actual skill. Hmm? You have already studied up to class 10th, okay, mathematics you've already studied, so now what happens is it is more of your mindset. ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 2 साल से आप आईसीएआई की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग मैथमेटिक्स, यू नो। सो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि मैं मैथ्स कर ही नहीं रही हूँ। सो यू आर ऑलरेडी डूइंग मैथमेटिक्स, सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज रेगुलर प्रैक्टिस, ओके। सो every day you have to study hard, study your formulas. Once the formulas are in your hand, you it gives you an empowerment. आपके अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है ना, तो आप बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। क्या हो जाता है कि वहां प्लस है माइनस है, यार क्या करूं, मुझे याद ही नहीं आ रहा, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एकदम परफेक्ट मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूले परफेक्ट होंगे तो आपकी आधी जो जंग है ना, आप जीत चुके होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन। प्लानिंग हो गई सब, अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि हम मिस्टेक्स कम से कम करें। तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट नो योर फॉर्मूला एंड देन यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस। फिर आप बोलेंगे अभी 12th से तो हमारी अकाउंट्स का पेपर है, इसका पेपर है, ठीक है ना, आप उसी की पढ़ाई कीजिए। लेकिन रात को सोते समय हमने क्या बोला है कि आप बस एक बार ना गो थ्रू कीजिए फॉर्मूला की नोटबुक को। आपको कुछ नहीं करना, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना है। डोंट लूज द ट्रैक, यू नो। बहुत बड़ा गैप आ जाए जिन्होंने भी मैथ्स नहीं लिया 11th 12th में, क्योंकि उस समय क्या होता है, हम रोज कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे और हम ना प्रैक्टिस किए थे। तो वो उससे क्या होता है, हमें आदत हो जाती है उस सब्जेक्ट की। सो ऑल दोज हु हैव डू नॉट हैव मैथमेटिक्स इन 11th and 12th, जस्ट गो थ्रू योर नोटबुक व्हाइल गोइंग टू बेड। 5 मिनट लगेंगे आपको, बस एक बार गो थ्रू कीजिए और देन यू गो टू स्लीप। So even when you are having papers of other subjects, just go through it. You will have no problem. Okay, Bhumi? And I can assure you, if you are attending the ICAI classes, if you are looking into the past videos of ICAI, and if you are referring to the study material of ICAI, and if you have already given the mock test, वो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन even if you have not given the mock test, give it now. You know, sit at home, solve it, and see how much marks you get. तो you do not require external कोचिंग। एंड स्पेशली अब तो कोई जरूरत ही नहीं, आपकी एग्जाम अब 10 दिन पे है, तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अरे मैंने कोचिंग ली होती तो ऐसा होता वैसा। व्हाट इफ वाली सिचुएशन जस्ट रिमूव फ्रॉम योर माइंड। यस सर, यस भूमि, दैट्स द राइट अप्रोच। यू विल डू योर बेस्ट। बहुत अच्छा लिखा है भूमि ने, आई विल डू माई बेस्ट। यही हमें देखना है, Good. कर्मण्येवाधिकारस्य We ना, आप कर्म कीजिए, आईसीआई आपको फल दे देगा। now I'm coming to the next chapter, which is having the significant weightage, and as non-mathematics students, you may feel little bit difficult in the probability and the theoretical distribution portions also be. Probability is here, the basic fundamentals only again tested here, like addition theorem, and conditional probability and multiplication, like all these properties of related to condition probabilities also be. Keeping in these all formulas, addition theorem probability and condition related probabilities, and all these aspects are well helpful. The again and again telling the probability and expected value of the probabilities are also be part of it.
that values also be very important. And coming to the theoretical distributions here, discrete distribution and continuous distribution. Discrete distributions are concerned, the binomial and Poisson distributions comes under the category of the discrete distributions. Continuous distribution, though several distributions are there, as part of the syllabus is foundation is concerned, only normal distribution is given, only part of the syllabus actually. So these aspects and those values, sometimes you may feel that the normal table values are not given. Most of the times it will be given in the table values or also be in the question paper itself. It's a simple, easy and cumulative normal distributions were also be given. Dear students, once again I am requesting, if you feel these topics are not able to understand also be, just concentrate on the example sums, and ICA's video lectures are also be, that will definitely helpful to the understand the simple probability, what is probability, what is the axiomatic approach of the probability, and addition theorem of probability, and other conditional functions are also be. And next one is how the probability expected values are also be solved. All these examples also be, you can just look at in this given in the study material. Theoretical distributions are also similar. What is the binomial distribution function? What is the binomial distribution follows, and what is the mean of the binomial distribution, variance of the binomial distribution, properties of the binomial distribution. Similarly, the Poisson distribution is concerned, the mean and variance of the Poisson distribution is equal. That is the special property. And like that, some student was asked, sir, probability में से ज़्यादा वे ज़्यादा सकते 5 के आएगा, और जैसे कैसे probability में 10 actually combining of probability and the theoretical distribution, I am saying that 10 marks questions are there. दोनों मिलके probability and theoretical distribution मिलके 10 our questions के आसपास आएगा. That is the my concern actually. Okay, don't worry on those topics are also be. Just you just look at the example sums, that you will be able to cover this topic also confidently, and you will able to attempt in the examination also be. Again and again and telling, the study material is the main base for the attempting the examination also. Main base syllabus is also main base for the examination. This is not the tough examination like engineering and other courses are also be. Here only basic fundamentals knowledge only tested here. So this paper is although it's a objective and application based also be, here just for the understanding of this entire mathematics and statistics in other fields of the accountancy areas, this will be helpful for further studies also. Now most of the things were covered for the examination purpose. Rashmi madam, are you there? Can you? Yes, sir. I'm here. Yeah. Yes. सर ने अभी बताया आपको प्रोबेबिलिटी के लिए और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। उसमें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशली, उसमें क्या हो गया है कि बहुत बार जैसे वो फॉर्मूला कहाँ कैसे आया उसका आपको स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो वो आपके रीडिंग के लिए था। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूला है, जो आपके देखते हैं हम जो नीचे समरी में दिए रहते हैं ना फॉर्मूला, तो वो आप कीजिएगा, ठीक है? तो वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि that is one part. So one part is that even those in especially in theoretical distribution, and for those students who have not taken up mathematics in an 11th and 12th, and even if you have taken,
what is important is now you must know all the three formulas for the three distribution. Okay, so you have two discrete and one continuous distribution. So you have to just concentrate on the formula. You don't have to see how that formula you are able to get. Okay, that is the first thing. Second thing is the question. Like for example, you have 16.1 question in application of binomial distribution. So a coin is tossed 10 times. Assuming the coin is unbiased, what is the probability of getting four heads, at least four heads, at most three heads? तो ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें से एक ही कुछ आएगा. वो वहां पे आपको एक साथ क्यों दिया है, ताकि आपको ये फर्क पता चले कि फोर हेड्स आया तो कैसे आंसर करना है, और एटलीस्ट फोर हेड्स आया तो कैसे करना है. इट इज देयर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. You will get only one of these only. Okay, you can't have both of the things in the same question. Your question carries only 1 mark, so they will not ask you these two questions together. So wo you have to just like simplify things. So that is one part of it. Then what is important, like sir has already told, that is what is important is the properties, like what will happen when you have for example in discrete, the formula says x for 0 1 2 3 4 up to n, and it is written 0 otherwise. Okay, so in that case what happens, for that is I'm talking about the binomial distribution. तो उसमें क्या हो जाता है कि जब अगर आपको फॉर्मूला ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो एनसी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके बाद इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, दैट इज मेकिंग द कंप्लीट फॉर्मूला. ठीक है, सो दोज थिंग्स ऑल्सो, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको केयरफुल रहनी है. जैसे फिर क्या होता है, यूनिपैरामेट्रिक किसको बोलेंगे, यूनिमोडल क्या है, यूनिपैरामेट्रिक अलग है, यूनिमोडल अलग है. तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो आपको व्हेन यू आर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन यू विल बी एबल टू मेक आउट. तो उस समय आपको शब्दों पे ध्यान देना है. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शब्दों पे ध्यान देना बहुत सिंपल है. यूनिमोडल किसे कहते हैं, बाय मॉडल, मल्टी मॉडल, ये वाले वर्ड्स है. फिर उसके बाद यूनिपैरामेट्रिक, बाय पैरामेट्रिक, तो वो आप देख सकते हैं. उसके बाद हाँ, व्हेन विल एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स अटेन मैक्सिमम वैल्यू, कब होगा, व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.5. ये वाले जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं. देन क्योंकि थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने देखा है कि लोगों को लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा है और उसमें इतने से ही क्वेश्चंस आएंगे. उतना बड़ा नहीं, वो बाकी सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं. लाइक हाउ टू फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा, वो आएगा नहीं ना इतना बड़ा, तो आप फिट करने के लिए आपके पास उतना टाइम ही नहीं है. लेकिन इट इज देयर इन द स्टडी मटेरियल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कि हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. Thank you, madam. Thank you Yes, so sir. much for your. And once again, students, and I request you, when you are studying the material also, when you are not able to understand the concepts are also, break down the complex into smaller and meaningful steps are also, which are already explained in the study material also. Use the diagrams and the tables, especially in the sets relations topics, and tables for the present value, future values, which are also given in for the time value of money, and for normal distribution values are also be. And you create your own kind of like a formula sheets and formula notes are also, that will be definitely help. And you create these, your notes also be segment wise and the topic wise also be, definitely that will be helpful. Now I am requesting students, somebody, Ankit has raised. Technical team, can Ankit, can I want to speak actually. Ankit. Please unmute you, Ankit. Good afternoon, sir. May I know, Mr. Ankit, good afternoon. Yes, please. Sir, I have query about the statics mainly. Mm-hmm. So statics has many formulas, many formulas is there. So there is a confusion to how to remember them. I studied 2-3 times,
but I have still confusion about the formulas. So I just wanna ask you, sir, that how can I simplify the format that I will never confuse again in the remembering the formulas of the statics portion specifically. Can I ask one kind of questions? Actually, basically, where you feel confusion, actually, I understand that measures of central tendency, measures of dispersion, there you may feel that they are different kind of formulas for different types are also. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. The question basically questions may be in the examination also. If you look at, I had already told my dear friend in the beginning itself, actually, the questions are simple objective type of questions for only CV. Where these kind of formulas, if you see the continuous series, the formulas are very, the questions are also be very length. If it is the data would be suppose single line data, that the sum on the arithmetic mean is the sum of the observations by the number of observations. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. There you can easily remember the formulas are also be subject to that actually. Even second one is the this is the called raw data, that are series is individual series are also be. Yes, sir. Next portion is the discrete series. The corresponding student is there, respective number of students, number of persons are also, frequencies are also be given. That is called discrete series are also. Next one is the we club the some kind of thing. This class intervals are also mentioned there actually. Based on the class intervals, the formulas are also be defined. Most of the questions in the examination purpose are also be given like that. The questions you categorize, there is no confusion behind to understand this any kind of formulas are also be. First look at arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. These are the mathematical related formulas are also be central mathematical related positions. Median is the middlemost value. If you look at the number of observations are odd number of observations or even number of observations. Odd number of observation is the central position only, n plus 1 by tooth item. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. And if it is the even number of observations, n by 2 plus n by 2 plus 1th item, Yes. average of these observations is the median. Any doubt on this? And mode is the which number of items are repeated more number of times. Okay, Okay, sir. Okay. and the geometric mean, how we can understand actually. Geometric means look at the formula that three number series are also. Suppose two numbers are there, square root of AB. Three numbers are there, cube root of AB, ABC. Like Mhm. that, you Yes, have sir. to remember those formulas are also be. My once again, I request just categorize those formulas. The questions are also be given in the exam. In the questions, the study material also be, and those examples clearly understand well, and no confusion among these categories are also be these three categories: individual series, discrete series. Just let us concentrate on that. When you want to compare the cumulative frequencies among them, actually how much series actually, those kind of questions may be asked in the for the chapter, like for the first question chapter, the disc and descriptive statistics first chapter also. Yeah. You understand, my dear friend? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Let us focus on those aspects. No confusion. Don't worry on those aspects. And you write yourself today itself. Is what are the formulas are there? Categorize this. Categorize the questions are also be same in the case that you can identify it also. Any further issue on that? There's even similar way. All the topics and formulas are also we write what kind of uh, questions were there, and while some about the other person is also another side. I have problem in identifying whether the sum is about permutations or combinations, and
In the similar where the permutations were used, where the combinations are also be used, clearly given in the study material also be. Okay, sir. And I request Madam Rashmi Madam, please just to throw light on about this. Yes. Yes, sir. While trying to learn formulae, you have to remember the concept. Okay, so that time when you remember the concept while learning the formula, it becomes easy. Like just now, sir has very lucently told you about how if I'm trying to learn the formula for median, बड़ा वाला जो median का formula है ना, n/2 करके हम जो बड़ा सा लिखते हैं LCB लेके, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि वो जो डेटा है ना वो हाफ में डिवाइड होने वाला है। तो फिर मुझे n/2 लिखने की याद रखने की जरूरत नहीं, मीडियन है ना तो n/2 ही आएगा। ठीक है, क्वार्टाइल है तो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा तो n/4। इस तरह से आपको फॉर्मूला जो है ना, यू शुड नॉट सेपरेट द फॉर्मूला फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला एक साथ अगर आप उसको उसका मेल करेंगे ना, तो आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी। दूसरी Okay. बात है, ये आप भूल जाइए कि अरे मुझे इतने फॉर्मूले याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम आप देखिए एबीसीडी हम 3 साल की उम्र में हम 26 अल्फाबेट्स याद कर लिए। तो अब तो हम बहुत बड़े हो गए, तो हमें ये सब बहुत इजीली आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि मुझे याद करना है याद करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तो मुझे फॉर्मूला अपने आप से याद होगा। और जैसे मैंने बताया कि बोल बोल के आप कीजिए। जब आप घर पे सॉल्व करें, एग्जाम सेंटर में नहीं, उस समय आप क्या करना है, यू हैव टू से द फॉर्मूला एंड देन सॉल्व इट। आप जितनी बार देखोगे बोलोगे तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट जो होता है फॉर्मूला याद करने में आसानी होती है। एक उसके बाद ये है कि जो मेरी इंपॉर्टेंस, जैसे सर ने बहुत ही अच्छा सा वो बना के दिया कि कौन से चैप्टर्स में को कितना वेटेज है, तो उस चैप्टर वाइज आप अगर फॉर्मूला लिख लें एक जगह, तो आपको जो है जिस चैप्टर को ज्यादा वेटेज है, ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं, उसके फॉर्मूले आप ज्यादा अच्छे से कर लीजिए। और जैसे धीरे धीरे फिर जैसे आपकी बुक है, मतलब आपकी फॉर्मूले की बुक तो है ही, लेकिन आप कहीं पे और एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फॉर्मूले आपको अच्छे से आने ही चाहिए। और ये राम कुमार ने क्या बोला है, जस्ट लेट मी सी द क्वेश्चन। फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग। सर कैन यू सी द क्वेश्चन? $729 is a perfect cube and perfect square also, but the answer is 552. Okay. एमटीपी में क्वेश्चन है। आप सब लोग को दिख रहा है? स्क्रीन में शेयर कर दो, 1 मिनट। तो कोई मुझे बताएगा इसमें लॉजिक क्या है, 552 क्यों आंसर आया है? $295 का हमने क्या लॉजिक लेना है? Is 295 a square of anything? So if I go to the calculator, I will see 295, and what will I do? I will try to find। पहले तो मैं देखती हूँ कि स्क्वायर रूट निकलता है क्या, तो स्क्वायर नहीं निकल रहा 295 का। ठीक है, उसके बाद मैं देखती हूँ कि 295 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, किससे डिवाइड करती हूँ, अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ सपोज, तो मेरे पास क्या आता है, 59 आता है। हाँ ठीक है, अभी मैं 381 को देखती हूँ, 381 डिवाइडेड बाय 7 करके देखती हूँ, तो वो डिवाइड नहीं होता। 381 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 127 आता है। उसको वापस मैं अगर 3 से डिवाइड करती हूँ तो कैसे आता है? यस, somebody has answered, let us see the answer, because it's an even number। देखिए
मैं वही बोल रही है कि आप जो है क्वेश्चंस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, इतना सिंपल उसका आंसर है। आपने देखे 4 वहां पे लिखे हुए हैं, और उसे सबसे सिंपल आंसर है उसका कि वो इकलौता नंबर है जो इवन है। हम्म तो उसका आंसर इसीलिए 552 है, ना उसका स्क्वायर का। क्यों? देखिए, आपने 295 का स्क्वायर रूट निकालने का शुरू किया तो आपको दिख रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ठीक है, मैंने तो वो भी जाके करके देख लिया कि 295 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 59 आ गया, तो वो तो प्राइम आ गया। तो उसके 381 को 59 से डिवाइड करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। तो दैट इज, आई मीन, obviously you will have those things, but the first and foremost, like, you have to, institute is asking you to stay close to the basics. Now it was such a simple question where you're only talking about what, whether it's a even number or an odd number. Yes, thank you so much. So I hope, Ram, this clarifies your question. Now, madam, now I look at some other aspects. Actually, some student has raised about the how the permutation and combination should be clarified, categorized differently. Also, be just in the permutation, just a collection of the objects or settings of some kind of kind arrangements are made. Suppose A, B, C category, A, B, B, A, B, C, C, A, A, C, like that. We can arrange in there some kind of order actually, whereas order is not followed necessarily, like when it's A, B, B, A, these kind of combinations are not necessarily followed in the combinations actually. This is the purpose difference, and one should have to understand where is the selection of the committees and other things. These should be followed actually. One should please understand the differences between the permutation and the combination are also, and where permutation is used and combination is also be used, and focus on those aspects, and where the differences are also be there. Just pointed out some student also be about Ram. This is a good question are also be. This is a sub questions are except one is the odd number, except the things are even numbers are also be. And next, this is the important aspects which is helpful. Anybody wish to ask anything, and by and open for that questions actually, anybody please, and anybody raise their hands. Otherwise, we will wind up today's section. Ram Kumar, thank you and for your nice question, and we will close this today's section, and wish you all the best and for the examination. And thank you, madam, Thank for you, sir. your joining the session, and you have guided the So students. can I say 2 lines? Yes, yes. Yes. So आप सबको बेस्ट ऑफ लक तो है ही, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी अब फिक्स हो गई है। आपको ये देखना है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर ने सब बता दिया है कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे ज्यादा वेटेज है, वो वाले चैप्टर्स आप अच्छे से करेंगे, उनके फॉर्मूले आप अच्छे से करेंगे, और उसमें एग्जाम में भी जाके आप पहले देख लीजिए कि आप ये करें। और अगर पहले 5-6 क्वेश्चंस ठीक से नहीं आ रहे तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि थोड़ा नर्वसनेस रहता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये तो हाथ से निकल रहा है सब्जेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है, नर्वसनेस होता है। थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लीजिए। क्यूए का जो पेपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के समय कई बच्चों को थोड़ा डर लग सकता है, तो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लीजिए, गेट योर माइंड टुगेदर, गेट योर थॉट्स टुगेदर, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। यस सर। Yes, yes. Thank you, madam. Thank you for joining this section So also. there is one question from Sham, I think. Can you see that question? No, no, I can't able to see. Yes, yes. I can't able to see, madam. Um, Yes. Anybody wish to raise their questions, please post. I'll just share the screen, sir. What is their question? He question. 46 number question he's asking. Madam, we can't right now answer all the Yes, questions sir. actually right Okay, we'll just post it over there. Okay, in the question answers. So we'll post it over there.
Shyam, I'll answer you in the question upload of PDF upload. Yes, sir. We'll wind it up. Thank you, student. And it may be maybe interpretation may be wrong or right. Actually, definitely we will take the right decision only. Actually, it's not like actually one question may be interpreted maybe 729 perfect square, perfect cube, and it's a perfect square also be. So it is the one among the all the answers actually which is the right appropriate answer also be we will decide. Maybe key answer may be wrong actually, maybe one kind of interpretation may be like that it's a kind of odd and even numbers are also be. Keep it all the kind of aspects are also be very important actually, which is more appropriate accordingly we will give also be weightage more. And my dear students, once again request all the students be focused on the examination. There is coming next week onwards it's a start, and wish you all the best for the examination. Thanks madam for joining us. Thanks Thank you, technical sir. team Thank you for also. the Thanks students. opportunity. Yes, Wish you sir. all the best also be. Yes, thank you. Technical team, please wind up this section. Thank you.